अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। एक बार फिर हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा व तालबात, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं इस वक्त हम क्लास 7 में हैं। हमारा आज का सब्जेक्ट जो है वो है हिस्ट्री चैप्टर 4 और हमारा आज का टॉपिक जो है वो है द मुग़ल एम्पायर। क्वेश्चन एंड आंसर इसके जो है, क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग: मनसब, मंगोल, सिसोदिया राजपूत, राठौर राजपूत, नूरजहाँ, सूबेदार, मारवार, गवर्नर, उज़्बेक, मेवार, जहांगीर, रैंक। अब इनको आपस में सही तौर से मैच करना है। तो अब इसका आंसर जो है मनसब के साथ रैंक आ जाता है, मंगोल उज़्बेक से है, सिसोदिया राजपूत, मेवार, राठौर राजपूत, मारवार, नूरजहाँ, जहांगीर, सूबेदार, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। A part: the capital of Mirza Hakim Akbar's half brother was dash dash. Second, the five Deccan sultanates were Berar, Khandesh, Ahmednagar dash dash and dash dash. C part: if Zat determined a Mansabdar's rank and salary, Savar indicate his dash dash. D part: Abdul Fazal, Akbar's friend and counselor, helped him frame the idea of dash dash the so that he could govern a society composed of many religions, cultures and castes. आंसर है इसका द कैपिटल ऑफ मिर्ज़ा हकीम अकबर्स हाफ ब्रदर वाज डैश डैश। आंसर है काबुल। बी पार्ट: द फाइव दक्कन सुल्तानस वेर बीरर, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। C part: if Zat determined a Mansabdar's rank and salary, Savar indicate his dash dash number of dash dash cavalrymen. D part: Abdul Fazal, Akbar's friend and counselor, helped him frame the idea of Shulekol so that he could govern a society composed of many religions, cultures and castes. Question 3 है What were the central provisions under the control of the Mughals? कहता है तीसरा क्वेश्चन कहता है सेंट्रल प्रोविजन क्या थे जो मुग़लों के कंट्रोल में जो प्रोविजन थे उसके व्हाट वेयर द सेंट्रल प्रोविजन अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुग़लों के कंट्रोल जो था हुकूमत जो थी उसमें सेंट्रल प्रोविजन क्या थे। आंसर है द सेंट्रल प्रोविजन अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुग़ल वेयर दिल्ली सिंध, एक तो दिल्ली थी, उसके बाद सिंध, उसके बाद काबल, उसके बाद मेवार, मारवार, गुजरात, बिहार, बंगाल, चित्तौड़, उड़ीसा एंड दक्कन, ये सारे इलाके जो थे मुग़लों के अंडर थे। क्वेश्चन 4 व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड द जागीर? मनसबदार और जागीर के दरमियान का रिश्ता। आंसर है ए जागीर वाज रेवेन्यू असाइनमेंट फॉर द मनसबदार्स। The Mansabdar had the right to collect revenue from a Jagir, but they could not reside in or administer the Jagir. The only had right to the revenue of their assignment, which was collected from them by their servant, while the Mansabdar served in some other part of the country. In Akbar's region, these Jagir were carefully assessed so that their revenue were roughly equal to the salary of the Mansabdar. By Aurangzeb's region, the actual revenue collected was often less than the granted sum. Moreover, a huge increase in the number of the Mansabdars meant a long wait before they received a Jagir.
These and other factors created a shortage in the number of jagirs. As a result, many jagidars tried to extract as much revenue as possible while they had a jagir. These factors during Aurangzeb's region led to the peasantry's suffering and loss. Question 5 है What was the role of the Zimindar in Mughal administrations? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में ज़मींदार का क्या रोल था उस दौर में? आंसर है द ज़मींदार्स इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टेड रेवेन्यू. वो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करते थे फ्रॉम द पीजेंट किसानों से. दे एक्टेड एज इंटरमीडिएट्स. वो बीज वाले बंदे का काम करते थे बिटवीन द रूलर्स एंड द पीजेंट्स. रूलर्स और पीजेंट्स के बीच में जो बंदा होता है उसका काम करते थे, दलाली वाला. They collected tax on the procedures of the peasantry, which was a source of income for the Mughal rulers. वो टैक्स जमा करते थे जो किसानों को देना पड़ता था. सोर्स ऑफ इनकम जो था वही था उस टैक्स में से फॉर द मुगल रूलर्स, मुगल बादशाहों के लिए. In some areas, the zimindars exercised a great deal of power, and sometimes zimindars and peasants of the same caste allied in rebelling against Mughal authority. Question 6. How were the debates with religious scholars important in the formation of Akbar's ideas on governance? कहता है how were the debates with religious scholars? कैसे डिबेट होते थे मजहबी स्कॉलरों के साथ इम्पॉर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडियाज़, जो कि इम्पॉर्टेंट था इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडिया. जो अकबर के ख्यालात थे उनको फॉर्मेशन में उनको फॉर्मेशन करने में ऑन गवर्नेंस, ये हुकूमत में. आंसर है Akbar was interested in the religious and social customs of different people. It made him realize that religious scholars who emphasized on ritual and dogma were often bigots. Their teaching created divisions and disharmony amongst the subject. This led Akbar to creation of the idea of Sulah equal or universal peace. This system focused on ethics and the values of honesty, justice, peace that were universally applicable. Abdul Fazl helped Akbar in framing a vision of governance, proud his idea of Sulai Kul, and later Jahangir and Shah Jahan followed his principle to governance as well. Question 7. Why did the Mughals emphasize their Timurid and not their Mongol descents? Answer है The Mughal emphasized on their Timurid and not their Mongol descents because Genghis Khan's memory was associated with the massacres of innumerable people. They took pride on the fact that Timur had captured Delhi in 1938. Each ruler got a picture made of Timur and himself. Question 8. How important was the income from land revenue to the stability of the Mughal Empire? Answer. The income from land revenue was the main source of income of the Mughal rulers, and hence it was very important. The salary of soldiers were paid and the welfare of the general public was conducted using the income from land revenue. In order to run the administration and law and order, the income from land revenue was required. Question 9. Why was it important for the Mughals to recruit Mansabdars from diverse backgrounds and not just Turians and
Iranis? आंसर है it was important for the Mughals to recruit mansabdars from diverse backgrounds and not just to raise just Turinis and Iranis because the empire had experienced to encompass different regions and provinces. By recruiting Mansabdar from diverse backgrounds, the Mughals won the trust of the common people and created a balanced administration. तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक द मुग़ल एम्पायर। उम्मीद है आपको अच्छी समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम इंशाल्लाह अगला सबक करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।